Hello friends and welcome to Hitbullseye. My name is Manish and in this session I'm going to discuss with you the current affairs for the 4th week of November 2022. देखेंगे कि क्या कुछ important हुआ है पिछले एक हफ्ते में. There have been really important events specifically in sports as well as in international relations. इन दो fields में कुछ specific हुआ है. So many awards have been given away. That also we will be discussing in this video. So stay with me and let's get started. So these are the news that we are going to discuss, starting with the first one, that is the Gandhi Mandela Award. The Gandhi Mandela Award. So Mahatma Gandhi, of course all of us are familiar with, and Nelson Mandela. Both of them were the votaries of peace, they were the messengers of peace. तो इन दोनों के नाम पर एक award है, Gandhi Mandela Award, which is of course given to someone who has done significant achievement in the field of peace and harmony. तो देखेंगे कि इस साल का award किसे दिया गया है. Second, Network Readiness Index. This index is launched internationally और इंडिया का इसमें जो रैंक आया है वो हम डिस्कस करेंगे. That the FIFA World Cup. The world right now is gripped in the fever of football. Not so much in India because that's not the kind of culture here. Here we do that on cricket, on the occasion of cricketing events. But FIFA World Cup, basically football बहुत ज़्यादा खेली जाती है Europe, South America, specifically इन दोनों continents में. So FIFA World Cup is being held in Qatar, and we will see some important facts about it. And also there is a person from India, there is a dignitary from India who has visited the opening ceremony of FIFA World Cup. We'll see who he is. 53rd International Film Festival of India Awards 2022. हर साल International Film Festival of India या IFFI होता है गोवा में. So इस साल भी हुआ है, लेकिन Actor of the Year का award किसे मिला है? This we will try to find out in this news. Then Naseem Al-Bahar 2022. This is basically a joint military exercise between India and one other country. We will find out which country. Then Purnima Devi Burman. So don't worry if you haven't heard her name ever. I didn't also. So she is a conservationist. She is an environmentalist. She has been given a very prestigious honor by the United Nations. We will find out what that honor is and why has she been given that honor. Next, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार. डॉक्टर कलाम के नाम पर एक सेवा पुरस्कार या अवार्ड दिया जाता है. We will see कि क्यों दिया जाता है और इस बार किसे दिया गया. Then Lachit Barphukan. Now this name might sound completely alien to you, but he has been a very prominent personality in India's history. So recently his 400th birth anniversary was celebrated. We will find out who was Lachit Barphukan and why is the government celebrating his anniversary. Bisleri. Of course all of us have had Bisleri water sometime or other in our lives. Bisleri is being sold to the Tata group. Tata is the one acquiring Bisleri for a massive 7,000 crore rupees. You heard it right. That is the valuation of Bisleri जो कि recently हुई है और इतने में Tatas ने acquire किया है Bisleri को. Next, international एक news है IORA, Indian Ocean Rim Association. There's a association of certain countries which encircle the entire Indian Ocean. तो उनकी एक meeting हुई है, ये कहाँ पे हुई है और IORA में कौन कौन से members आते हैं? This we will try to find out in this news. Then Constitution Day of India. So today, that is 26th of November, is celebrated as the Constitution Day of India as well as the Law Day of India. We'll find out why. And finally, Cristiano Ronaldo. Of course, if we're talking about FIFA World Cup, there are going to be so many footballers in news. Reason being that during the FIFA matches, a lot of new records are made and a lot of old ones are broken. We'll find out which new record has been created by Cristiano Ronaldo. Let's get started. So here is the winner of the Nelson
the Gandhi Mandela Award. That is the Dalai Lama, the 14th Dalai Lama. Fun fact, Dalai Lama is not a name. It's the name of a designation, it is not the name of a person. So he is the 14th Dalai Lama. His name is not Dalai Lama. It is the name of the designation. It's like saying someone is the Prime Minister of a country, but that person should have a name. Like, who is the Prime Minister of India? Narendra Modi. So the name of the designation is Prime Minister. The name of the person is Narendra Modi. Similarly, the name of the designation is Dalai Lama. But who is he? He is Tenzin Gyatso. His actual name is Tenzin Gyatso, and he is the 14th Dalai Lama. So who is the Dalai Lama? Dalai Lama is the highest religious head of Buddhists in the world. And the history is something like that he used to live in Tibet with his followers, and in the 1950s, basically 1958-59, around that, they were demanding independence for Tibet as an independent country for Buddhists. But China, of course, did not allow that. China sent its forces, and they came to India to seek political asylum. And guess what? Indian government did provide them political asylum, and they, basically him along with his thousands of followers, live in a town called McLeodganj near Dharamshala in the state of Himachal Pradesh. So that is a place that has been provided by Government of India to the Dalai Lama and his disciples. इनको 1989 में Nobel Peace Prize भी मिल चुका है, and now he has got the Gandhi Mandela Award 2022. So he was given this award by Himachal Pradesh Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, R.V. Arlekar. And the jury comprises of some really honorable people, including former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan and Justice Deepak Misra, former Supreme Court Judge Gyan Sudha Mishra, former Chief Justice of Nepal Justice Kedarnath Upadhyay, and former Chief Justice of Bangladesh Justice M.D. Tafazzul Islam. So the highest judges of 3 different countries were in the jury, former highest judges. That speaks itself about the impartiality and the high level of quality that is accorded to this particular award. Right, so this time the winner is the Dalai Lama. Next is the Network Readiness Index 2022. This is basically about the network, the telecom network we're talking about, the broadband, mobile internet, and in general telephonic networks. So India का इसमें rank है 61. Network Readiness Index prepared by US-based Portulans Institute. And this has become a really important index. आज से शायद 10 साल पहले इस index की इतनी value नहीं होती थी. But if we talk about today, telecom has become, as jokingly said, that smartphone has become an extended organ of human body. So internet, telephony, telecommunication, these things have become indispensable in modern life. And that's why Network Readiness Index plays an important role in judging which country is doing how well in different parameters of network readiness, of course. So India's score has improved to 51.19 from 49.74. There are a total of 131 countries which were judged. 131 countries, and out of that India's rank is 61. Neither too good nor too bad. It's basically somewhere mediocre. And okay, so what was the criteria? What were the indicators for it? Number 1, AI talent concentration. AI talent concentration is one criteria. Second, mobile broadband internet traffic within the country. This is the second criteria. Third, annual investment in communication services. How much is there? Investment is there. Number 4, ICT services export. ICT, information communication technology services exports. Fifth, FTTH or building internet subscriptions. And sixth is AI scientific publications. In सब चीज़ों में India का अलग-अलग ranking आई है, but these are the 6 indicators that determine a country's ranking in this index. अगर top countries की बात करें तो सबसे पहला rank आया United States of America का, second rank है Singapore का, और third rank है Sweden का. These are the 3 top countries in network readiness.
Next, the FIFA World Cup. FIFA is Federation of International Football Association. Federation de Internationale Football Association. स्पेनिश में इसको इस तरह से लिखा जाता है, समथिंग लाइक दैट. तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं, its headquarters are in Europe of course. So FIFA World Cup 23rd World Cup हो रहा है, 23rd. And from India, Vice President Jagdeep Dhankar is the one visiting the FIFA World Cup opening ceremony. तो opening ceremony को attend किया इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखर ने. And this is the 23rd, right? So this is the 23rd FIFA World Cup. This is the image of the actual World Cup, and it is being held in Qatar. काफी controversy चली इसके ऊपर because they have a very grim human rights record. So the entire world is sort of protesting in one way or the other. I was watching this image in the newspaper the other day. There is a team, I don't remember which team exactly. So before playing, when their national anthem was being played, they were standing like this with their mouths covered by their hands, thereby depicting that there are so many human rights violations in Qatar because उनको black color के arm bands पहनने allow नहीं किए FIFA ने as a mark of protest. कई बार black color के arm bands पहने जाते हैं लेकिन वो उन्हें पहनने नहीं दिया गया, so they protested in this novel way. क्योंकि पूरी दुनिया में live telecast चल रहा था, so they just covered their mouths with their hands and they showed that how voices are being crumbled for human rights, in Qatar. काफी ज़्यादा criticism भी हो रहा है. And also the vice president interacted with members of the Indian community. ये भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का एक रीज़न है कि कतर में बहुत सारे ऐसे इंडियन और बहुत डेवलपिंग कंट्रीज से लोग गए जिन्होंने वहाँ पे काम किया है पिछले कई सालों में, स्टेडियम्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बट दे वर नॉट पेड वेल. उनको बहुत ही बुरी इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया एंड ऑल. तो ये दो मेजर कंसर्न्स हैं जो सामने आ रहे हैं. एनीवे, इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दिस वर्ल्ड कप गोज. Domestically also it's being opposed quite a lot by the people for spending a lot of money on such an extravagant event. Anyway, so next is International Film Festival of India. गोवा में हो रहा है ये, हर साल गोवा में ही होता है. And Telugu superstar Chiranjeevi was honored with Personality of the Year Award 2022. So Chiranjeevi is Personality of the Year 2022. ये सबसे important award होता है IFFI में. एक बेस्ट फिल्म का भी होता है, वो अभी दिया नहीं गया है. When it will be given, we'll discuss in the next week. So Chiranjeevi is the winner of Indian Film Personality of the Year 2022. Next, Naseem Al-Bahar 2022. This is a joint military exercise between India and Oman. India and Oman. So Oman is a West Asian country, in the Gulf, with its capital as Muscat. तो दो phases में exercise होगी, एक harbor phase, एक sea phase, right? तो joint military operational जो efficiency है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की exercises की जाती हैं. The bilateral relationship between India and Oman, थोड़ा सा अगर हम background देखें, 1953 में इंडो ओमान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी और तब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे एस्टैब्लिश हुए हैं. इट वाज द फर्स्ट बिटवीन इंडिया एंड एन अरब कंट्री. पहली कंट्री ओमान ही थी पूरे अरब वर्ल्ड में जिसके साथ हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी नेविगेशन और कॉमर्स के लिए. तब से बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हो रही है हमारी. फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी की हुई 1993 में हुई. तो 1953 से हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हैं और 1993 से हम उनके साथ ऑलमोस्ट 30 सालों से हम लोग उनके साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. दिस इज टू इंक्रीज सिक्योरिटी इन द रीजन बिकॉज बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं एंड सोमालियन पायरेट्स रियली आर अ बिग थ्रेट इन दिस पार्ट ऑफ द ओशन, द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ. तो इसलिए इस तरह की जो नेवल कोऑपरेटिव एक्सरसाइजेस हैं ये होती रहती हैं. Next is Purnima Devi Burman. So she is Purnima Devi Burman. And why is she news? She is an Assam-based wildlife biologist. Assam-based wildlife biologist. She is one of the 5 champions of the earth by the United Nations Environment Program. हर साल UNEP
5 चैंपियंस ऑफ द अर्थ डिक्लेयर करता है, दोज पीपल हु आर कंजर्वेशनिस्ट्स, हु आर एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड हु हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। और इनमें से इस बार एक नाम इंडियन का आया है, हु इज पूर्णिमा देवी बर्मन, विच इज अ बिग ऑनर फॉर अस। These are the highest environmental honors by the United Nations Environment Program. इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, whose actions have, I quote, transformative impact on the environment. Right? तो किस कैटेगरी में इनको ऑनर किया गया है? Entrepreneurial vision. जिन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी अच्छा किया होता है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। Now, why has she been given this award? Let's see. She has been working with local communities, specifically women, in Assam for more than a decade to conserve the greater adjutant stock, an endangered wetland bird whose numbers have been declining due to habitat destruction and cutting down of trees. तो एक particular species है bird की, wetland bird है, great adjutant stock. इसको बचाने के लिए पिछले 10 साल से भी ज़्यादा से वर्क कर रही हैं। वहाँ की women को इन्वॉल्व किया है इन्होंने, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दैट्स व्हाई शी हैज बीन गिवन दिस अवार्ड, व्हिच इज अ बिग ऑनर फॉर द एंटायर कंट्री। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड गिवन दिस वीक। रवि कुमार सागर, सो ही इज रवि कुमार सागर, इन्हें दिया गया है अवार्ड। He is one of the youngest founders and CEOs of RK's Inno Group. इन्हें दिया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार for his persistent service to society and being one of the youngest entrepreneurs in India. Right? He is Ravi Kumar Sagar, also known as RK's S, nailed it as a budding entrepreneur during COVID-19 pandemic. तो ये बहुत मतलब सबसे छोटी एज में एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छा इन्होंने बिजनेस सक्सेस हासिल किया है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। लचित बारफुकन, सो इवन इफ यू हैव स्टडीड हिस्ट्री प्रॉपरली, यू मे नॉट हैव कम अक्रॉस दिस नेम, जस्ट लाइक मी, आई ऑल्सो हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन यू नो देयर आर सर्टन अनसंग हीरोज इन इंडियाज हिस्ट्री जिनके बारे में हम कभी नहीं पढ़े हैं। सो वन ऑफ दोज इज लचित बारफुकन। इनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है गवर्नमेंट ने, 400th बर्थ एनिवर्सरी। ही वॉज अ किंग ऑफ द एहम डायनेस्टी। एहम डायनेस्टी जो असम में हुई है 1600s में, तो उसके ये कमांडर थे लचित बारफुकन। एंड ही हैड सक्सेसफुली डिफेंडेड द एहम किंगडम फ्रॉम द मुगल्स। मुगल्स जब नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करना चाहते थे, सो ही डिफीटेड द मुगल्स इन बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। और काफ़ी सालों तक अहम डायनेस्टी, ऑलमोस्ट 500-600 साल तक ये डायनेस्टी चली, एंड दे डिड नॉट अलाउ मुगल्स टू एक्सपैंड टूवर्ड्स दैट एरिया। बट इनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलता है। बट नाउ यू शुड नो लचित बारफुकन, अहम डायनेस्टी, आसाम, बैटल ऑफ सरायघाट 1671। राइट, ये सारे फैक्ट्स आपको इनके बारे में पता होने चाहिए। Tatas are going to acquire Bisleri. Right, so Bisleri is one of the most recognizable Indian brands of packaged drinking water. Very few people know that there's a difference between packaged drinking water and mineral water. Bisleri is not mineral water. Bisleri is packaged drinking water. Mineral water होता है जिसमें कुछ added minerals होते हैं, जैसे कि हिमालय या कोई और बॉटल्स आती हैं जो कि थोड़ी कॉस्टली होती हैं। समटाइम्स वी थिंक कि कोई पानी की बॉटल 15-20 रुपए की और कोई बॉटल 200 रुपए की कैसे हो सकती है। दैट इज बिकॉज जो सस्ती वाली बॉटल है दैट इज अ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट लाइक बिस्लरी। देन देयर इज मिनरल वाटर, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। तो बिस्लरी जो है, इट इज द लार्जेस्ट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, इट इज नॉट द लार्जेस्ट मिनरल वाटर कंपनी। मिनरल वाटर के लिए इतनी बड़ी मार्केट नहीं है इंडिया में। इट्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड बाय वेरी रिच पीपल और मे बी स्पोर्ट्स पर्सन्स, या जिनको स्पेशली रिकमेंड किया गया होता बाय द डॉक्टर्स, दोज पीपल ड्रिंक मिनरल वाटर। नॉट अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर दैट, बट फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर it is a big market and it has been sold for approximately 7,000 crore rupees. इसके फाउंडर थे रमेश चौहान,
जो कि अभी इसके ओनर है, एंड ही हैज सोल्ड इट, एंड इन्होंने ही ये भी ही ऑल्सो aiming to disinvest 3 decades after selling soft drink brands Thumbs Up, Gold Spot and Limca to Coca-Cola. यानी कि Thumbs Up, Gold Spot और Limca भी तीनों पहले इन्हीं के ब्रांड्स होते थे जो कि इन्होंने कोका कोला को बेच दिए थे. अब बिस्लेरी इनके पास रह गया था, that also is selling to the Tatas. So there's a lot of brand value associated with Bisleri also. That also is included in that 7,000 crore rupees. 22nd IORA meeting, that is Indian Ocean Rim Association meeting. Indian Ocean Rim Association, Indian Ocean के आसपास वाली जितनी भी countries जिनकी boundary Indian Ocean के साथ लगती है, all those are a part of Indian Ocean Rim Association. And इसकी meeting हुई है अभी अभी ढाका बांग्लादेश में. And the Indian delegation was led by Minister of State for External Affairs, Dr. Kumar Ranjan. See, this is Minister of State for External Affairs. ये Minister of External Affairs नहीं है. Minister of External Affairs है एस जयशंकर. Minister of State जो होता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी स्टेट के मिनिस्टर हैं, बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स तो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है यूनियन मिनिस्टर से एक जूनियर रैंक. दिस इज बेसिकली मिनिस्टर्स जो है वो 2-3 तरह के होते हैं. सबसे ऊपर आते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, या उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी कह दिया जाता है. उससे एक स्टेप नीचे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कि रैंक में, डेजिग्नेशन में, पावर्स में थोड़े से कम होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स से. तो ये क्यों बनाए जाते हैं? जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए. सो इफ द मिनिस्ट्री इज बिग इनफ एंड इट हैज अ लॉट ऑफ वर्क, देन मल्टीपल मिनिस्टर्स मे बी रिक्वायर्ड. However, at the same time, the hierarchy should not be disturbed. There has to be one minister which is taking care of the entire ministry, and then below him or her there can be a couple of ministers maybe, and then those ministers should be the rank of Minister of State. तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज स्टिल मिस्टर एस जयशंकर, लेकिन उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन, राइट. तो ही अटेंडेड दिस ऑन इंडियाज बिहाफ. एंड IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पहली बार आइडिया जो है ये 1995 में एनविसाज किया गया था, जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला इंडिया आए थे. सो सी व्हाट अ कोइंसिडेंस. In the same week, Nelson Mandela's name we have heard twice. एक बार गांधी मंडेला अवार्ड में और एक बार IORA के कंटेक्स्ट में. अब IORA में है क्या? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. So this, as you can see, is the Indian Ocean. ये सारा आपका इंडियन ओशन है, और ये सारी जो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के साथ टच करती हैं, they are the members of Indian Ocean. Starting with सबसे पहले सबसे सेंटर में देखिए इंडिया. Then Bangladesh is there, Iran, Oman, Yemen, Somalia, Kenya, Tanzania, Mozambique, South Africa. So South Africa से आए थे, right? यहाँ तक हमारा इंडियन ओशन है. Then इस बीच में छोटे छोटे कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस आइलैंड, सेशेल्स आइलैंड्स, ये भी सारे इसके मेंबर्स हैं. Then if we go towards the Southeast Asia, Thailand is a member, Malaysia, Singapore, Indonesia, and in fact even Australia is a member. तो यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स इसमें सीधे सीधे कवर हो गए. योर एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. तीनों कॉन्टिनेंट्स बेसिकली वो सारे कंट्री जो इंडियन ओशियन जिसमें कॉमन है, that is Indian Ocean Rim Association. So all these are the members, and the purpose of this organization is the security and safety of navigation in the entire Indian Ocean region. It's an intergovernmental organization for fostering regional cooperation and sustainable development, and it has 23 member states and 10 dialogue partners. ये कुल मिलाकर 23 members हैं, और इनको याद करना बहुत आसान है. अगर आपको मैप की नॉलेज है, then you do not need to take a lot of load. Otherwise आपको अगर लिख के याद करना है, which I never recommend, कभी भी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स याद करने हैं, always, I would say always see them on the map. उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं याद करना चाहिए, जिससे कि और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी. सो दिस इज अ वेरी लेस और लिटिल हर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब ये थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है बिकॉज USA इज गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू Indo-Pacific theater due to the increasing influence of China in the region. USA is making a lot of new organizations like
the Quad, the new Quad, the the partners in Blue Pacific, the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, बहुत सारी ऐसे groupings हैं जो USA बना रहा है specifically इस region पे focus करने के लिए. AUKUS, AUKUS, which is Australia, UK, US. तो ऐसे में एक organization जो बहुत पहले से बनी हुई है, already चल रही है, and of those countries who actually have the stake in the region, तो उस organization को थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को bolster करना पड़ेगा, so that a country like USA coming from that part of the world should not have any dominance in this part of the world. Constitution Day, आज हम मना रहे हैं 26th of November is the Constitution Day of India. Reason being, this is the day on which the Constitution of India was adopted and enacted. So this here is the first page of the Constitution of India, and what is written over here is the preamble to the Constitution. Constitution यानी कि संविधान. When it starts, when you look at the first page, it is the introduction or sort of a gist of the entire Constitution. It tells us who formed the Constitution, the people of India. किस तरह की Indian nature, Indian जो state है उसकी nature क्या है? It's a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम क्या अचीव करना चाहते हैं? Justice, liberty, equality and fraternity. And the most important part, which is relevant for this news, किस दिन से adopt किया गया? The 26th day of November 1949. 26th November 1949. Now some of you may be confused कि अगर आज इसे adopt किया गया था, तो फिर हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों रिपब्लिक डे मनाया गया? अगर इसी दिन अडॉप्ट भी कर लिया गया था, इसे एनैक्ट भी कर दिया गया था. एनैक्ट और अडॉप्ट का मतलब है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26th of November 1949 एंड द डे इट इज साइंड इट कम्स इनटू फोर्स, राइट? तो ऐसा नहीं था कि इस दिन ये पूरा फोर्स में आ गया था और ऐसा भी नहीं था कि इस दिन बिल्कुल फोर्स में नहीं आया था. Some parts of the constitution came into force on this very date itself. लेकिन majority of the constitution को 2 महीने के लिए you can say sort of you can say suspend करके रखा गया कि इस दिन उसे implement किया जाएगा ताकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएं. Now why would we do that? Knowingly 2 महीने क्यों extend करेंगे? The reason lies in history. In December 1929, at the Lahore session of Indian National Congress, at the Lahore session of Indian National Congress in December 1929, ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 1 महीने बाद यानी कि 26th of January 1930 को हम लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. बिकॉज दैट यूज्ड टू बी द रिजॉल्व एट दैट टाइम कि हमें जितना जल्दी हो सके भारत को आज़ाद कराना है. अब उस टाइम पे थोड़ी पता था कि अभी 17 साल और लगेंगे. So of course the intent of the freedom fighters was that we will have such a movement in the next 1 month that we will make India independent in the next 1 month. तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था इस दिन और 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया था पहला इंडिपेंडेंस डे, जो ऑफ कोर्स हम नहीं मना सके. और इसी डेट को ऑनर करने के लिए हमने इस डेट को इंडिपेंडेंस डे ना सही रिपब्लिक डे के तौर पर चुन लिया. That is the reason why we deliberately waited for 2 months to give effect to a major or a majority part of the constitution. And also there is a story behind why 15th August was chosen as the Independence Day of India. अब 26 जनवरी को अगर हमने चुना था as a Republic Day, तो 15 अगस्त को Independence Day ब्रिटिश की चॉइस थी. Reason being, the last Governor General of India was Lord Mountbatten. He was sent to India to oversee the transition of power from the British into the Indian hands. Before being appointed India's Governor General, he was a military general and he was in the Eastern Front. Second World War के दौरान he was a commander in the Eastern Front, जहाँ पे जापान के साथ Allied forces की जो fight है वो चल रही थी. 15th August 1945 वो दिन था जिस दिन जापान ने अपने सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे. बिकॉज 6th अगस्त और 9th अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी.
उसके बाद जापान को टाइम दिया गया था, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए तो हम ये बॉम्बिंग जारी रखेंगे. दिस न्यूक्लियर बॉम्ब्स विल कीप डिस्ट्रॉइंग one city after the other in Japan. So finally on 15th of August 1945, Japan signed on the surrender document. तो लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा मानते थे कि ये उनके लिए एक लकी डेट है क्योंकि इस दिन अलाइड फोर्सेस जीत गई थी और जो एक्सिस पावर्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया था. जापान वाज द लास्ट वन टू सरेंडर. इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं इंडिया को इंडिपेंडेंट करने आया हूँ तो मेरे लिए एक लकी डेट है. Hence he chose 15th of August as the Independence Day of India. So behind both the dates there is a story. Independence Day was chosen by the British because they were the rulers at the time. Republic Day was chosen by the Indians to honor the freedom fighters who passed the Purna Swaraj resolution declaring it as the Independence Day of India. This is the story behind it. और 26 नवंबर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बन के तैयार हो गया था उसको हमने डिक्लेयर कर दिया Constitution Day of India, which we celebrate now. And also we call it as the Law Day of India. Law Day of India or Constitution Day of India, whatever you may choose to call it. That is the story that you should know about. Finally, the last news, Cristiano Ronaldo. I'm sure most of you know about him. He's one of the top 5 footballers in the world. Others being Lionel Messi, Karim Benzema, and then you have Neymar, people like that. Cristiano Ronaldo has created a world record. What is the world record that he has created? He has become the first male player to score in 5 World Cups. First male player to score a goal in 5 FIFA World Cups. That means it's been more than 20 years since he has been playing in the World Cups. तो 5 World Cups में गोल स्कोर करने वाले ये पहले मेल प्लेयर बन गए हैं. इन पोर्टुगल्स ओपनिंग गेम इन कतर अगेंस्ट गाना. तो ही इज प्लेइंग फ्रॉम द पोर्टुगल टीम. ऑफ कोर्स पोर्टुगल टीम के ये प्लेयर हैं. ही स्कोर्ड इन द 65th मिनट एंड it was also the 118th goal of his country, Portugal. He has now become the first male player to score in 5 FIFA World Cups. That is a record, and it's a massive record. Many players do not even get to play 2 World Cups. He has played 5, also scoring in all of them. That is a news. That is all for this week's current affairs. I'm sure you enjoyed it and I'm sure you learned a lot, many things from it. If you have any other suggestion for us, please write down in the comment section below. Also, if you want to say anything, if you have any other opinion, or if you want to ask anything, or like how did you find the video, or how the quality of the content, just let us know by commenting in the below section. That is all. This is me, Manish Mittal, signing off. Thank you.